सर्फैक्टेंट्स के लिए फिलहाल क्या कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि फोकस में है? एक तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर सर्फैक्टेंट्स की एक कंपनी है, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स होम और पर्सनल केयर सेगमेंट में काफ़ी हद तक कंपनी ने अपना नाम कमाया है। आपको अगर बता दें, इन दिनों कई सारे कंसर्न्स हैं, जैसे फ्रेट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल इशूज़, कस्टमर टाइप्स, ये तमाम चीज़ें और कारोबार विस्तार के प्लान्स कैसे हैं कंपनी के मैनेजमेंट से समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ U.Shekhar जुड़ गए हैं। मिस्टर शेखर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका EBITA नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके कारोबार में फ्रेट कॉस्ट को लेकर जो कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, उस पर ही आपकी राय, आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। FY22 में एक मेजर इशू था फ्रेट कॉस्ट, करीब 70% के अप मूव्स वहां पर देखने को मिले थे। कंटेनर कॉस्ट फिलहाल नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की स्थिति आपके कारोबार के लिए, मार्जिन के लिए बन रही है सर? इफ यू टेक द लास्ट ईयर, पिछली वर्ष में फ्रेट रेट्स जो है ऑलमोस्ट 500% ऊपर गया था। और one other was availability of containers. There was again issue with respect to availability of containers. Raw material arrivals were delayed. There was a lot of disruption, and this resulted in issues with respect to production, as well as the requirement of working capital, because we had to resort to higher stocks of raw materials to ensure that we don't run dry and our production pipeline is well stocked. However, as far as this year concerned, we do see a decline with respect to the freight costs. Nothing dramatic, but there has been a small decline compared to those peak levels. And we do hope that this trend will continue, so that this is able to reduce the impact with respect to the inflationary situation which consumers have faced, particularly in the last quarter of last year. So one important thing that we need to note is that the freight rates are declining. The raw material prices have declined significantly, and the trend is continuing. Number three, the Indonesian government has lifted the duty with respect to palm oil, which should further ease the situation. Though, of course, our raw material laurel alcohol is not based on palm oil, but based on palm kernel oil. This should reduce the pressure that all commodities have seen over the last 1 year or so. So we do expect, as far as the coming year is concerned, the pressure which was put on demand and consumption because of the inflation situation to start easing. So all in all, as far as the coming year is concerned, we do see particularly the personal home care market to improve on the demand situation compared to the last 6 months, which were quite difficult as far as this market is concerned. मॉर्निंग मिस्टर शेखर, प्रियंका यार, आपको एक और अच्छी प्लेजेंट न्यूज़ ही कहेंगे। हमारे साथ एक पैनल पे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। वो आज से नहीं, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट को पोजिशनल आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, काफी समय से रेकमेंड कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज अ प्लस फॉर अस to hear you more on the growth plans also. लेकिन आपसे, क्योंकि आपने दोनों बातें खुद ही बताई कि फ्रेट चार्जेस वहां थोड़ी सी अब सॉफ्टनेस हुई है, सो यानी यहाँ पर आपके प्रेशर्स ईज आउट होंगे। और दूसरी बात, आपने जो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट इंडोनेशिया से वेव ऑफ के बाद जो आपका एक रॉ मटेरियल है वो भी अब आपको सस्ता मिलेगा। तो क्या मिस्टर शेखर ये बेनिफिट कस्टमर्स को पास होगा? क्या आप रोल बैक करेंगे प्राइस हाइक? जरूर। जो पिछले वर्ष और ये बरस में भी हमारी जो सेलिंग प्राइस जो है इज डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस सिचुएशन। ओके, our the end price to the customers is totally in line with the raw material prices. So whatever reduction happens will certainly be passed on to customers. Okay, and what we are seeing is that our EBITDA per ton, which we have talked about as 16 to 18, we would certainly aspire to be within that. Our share of specialty ingredients in our portfolio
has certainly played a part in terms of the EBITDA per ton surge that we saw in the last quarter of last year. So our mix will improve in line with whatever has been happening in the market with respect to preference for mild surfactants, non-toxic preservatives, as well as products driven by sustainability. Okay. So as far as the coming year is concerned, let us look forward in line with the raw material situation which has come down. However, what is very, very important is that the logistics situation should continuously improve so that we are able to, reduce our working capital in terms of the number of days that we are able to require to hold our stocks of raw materials. So compared to last year, we do hope that our working capital blockage as far as raw materials are concerned are able to come down. राइट मिस्टर शेखर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर और रॉ मटेरियल इशू पर हमसे डिटेल में चर्चा करने के लिए। आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हम फिर से वापस से आपसे जुड़ेंगे।